morning, children. Myself, this is Rekha Pataria, PGT History, KV 1 HPC, Jabalpur. Today, we will learn the third part of the lesson 4 Thinkers, Beliefs, and Buildings. In this part, we will learn about the stupas, both Amravati and Sanchi, the role of Begums of Bhopal in preserving Sanchi stupa, destruction of the Amravati stupa, and the preserving of the Sanchi stupa and symbols of worship. Now, we will take our first topic, stupas. स्तूप एक ऐसी महत्वपूर्ण इमारत होती थी जिसे बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता था। स्तूप क्या थे? स्तूप एक प्रकार के टीले होते थे। यह अर्धगोलाकार छत लिए हुए जमीन के ऊपर उठे हुए एक बौद्ध इमारत होती थी। इसे पवित्र माना जाता था। इसके आंगन के बीचों बीच एक छोटे चबूतरे पर एक कलश या बर्तन में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जैसे उनके दांत, अस्थियां या बाल या उनके द्वारा जीवन काल में प्रयोग में लाए गए सामान गाड़ दिए जाते थे। ये स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बने होते थे, अतः इन्हें पवित्र माना जाता था। The stupa, a mound like semicircular structure of brick or stone. These stupas were built to preserve the relics of Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. Since they contain relics, they regarded as sacred places. राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों तथा लोगों के द्वारा दिए गए दान से स्तूप का निर्माण हुआ। इन लोगों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर अभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया है। इन इमारतों के निर्माण में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। The stupas were built by the donations given by the kings, the guilds, by the workers, the women and men, and the donation given by the bhikkhus and bhikkhunis. Name of the donators are mentioned on the inscriptions found on the railings and pillars of the stupas. Now we come to our next topic, structure of the stupa. स्तूपों की संरचना. The stup originated as a simple semicircular mound of earth known as and. स्तूप का जन्म एक गोला हाथ लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। Above the and there was harmica, a balcony-like structure that represented the abode of gods. अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। Arising from the harmica was the mast called yasti, often surmounted by छतरी और umbrella. हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। Around the mound was a railing separating the sacred space from the secular world. Wooden fencing and the gateways, means torandwars, were constructed in the stupas. Torandwar were richly carved and installed at the four cardinal points. टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। इन स्तूपों में पत्थर की वेदिकाएं तथा तोरण द्वार बनाए जाते थे। इन तोरण द्वारों पर नक्काशी भी की गई थी। इस प्रकार बच्चों हमने पढ़ा स्तूप के बारे में, स्तूप क्या होते थे और स्तूपों को किस प्रकार बनाया जाता था। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसे बोल रही हूँ, नोट करेंगे। Describe the structure of the stupa and give
any two examples of important stupas. स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए तथा महत्वपूर्ण स्तूपों के कोई दो उदाहरण दीजिए. Now we come to the next topic. Role of Begums of Bhopal in preserving the Sanchi Stupa. सांची के स्तूप में भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा योगदान है. भोपाल के शासकों जैसे शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया. इतना ही नहीं, सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला का बनाने के लिए अनुदान दिया. The rulers of Bhopal, Shah Jahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of ancient site. जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया. सांची में रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी. इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया. No wonder then the John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan Begum. She funded the museum that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volumes. She also funded the publication of the volumes. So, if the stupa complex had survived, सांची के स्तूप के अपने स्थान पर बने रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी. यह उन लोगों से बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे. One of the most important Buddhist centers, the discovery of the Sanchi, has vastly transformed our understanding of early Buddhism. जब फ्रांसीसियों ने शाहजहां बेगम से सांची के पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने फ्रांसीसियों को बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट किया. इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह बनी रही. The most important step taken by the Begums of Bhopal to preserve the Sanchi Stupa was to prepare the plaster cast copies and the original remains at the side, the part of the Bhopal side, and in this way they satisfied the French and the Englishmen. Now we come to the next topic, reasons of the destruction of Amravati. Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built. Now we will learn about the reasons of the destruction of the Amravati stupa. Amravati was discovered earlier. At that time, the scholars did not understand the value of the finds. अमरावती के बारे में कहा जाता है कि 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए. उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया. इससे पता चलता है कि अमरावती के राजाओं ने स्तूप के संरक्षण में कोई योगदान नहीं दिया, कोई रुचि नहीं दिखाई. यूरोपीय लोग यहाँ से कई मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर अपने साथ ले गए. कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाना कोई असामान्य बात नहीं थी. वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया. The rulers of Amravati did not take interest
in preserving the stupa. Several structures, panels, and statues were taken away from Amravati by the Europeans. It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of the British administrators. One of the few men who had different point of view was an archaeologist named H. Cole. He wrote, "It seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art." He believed that museums should have luster cast facsimiles of sculpture, whereas the original should remain where they had been found. Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about Amravati, although his plea for in situ preservation was adopted in the case of Sanchi. Now, we come to our next topic, reasons of the destruction of Amravati. Next topic is reasons of the survival of Sanchi. सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. Due to the good luck in escaping the eyes of railway contractors, builders, and Europeans looking for finds to carry away to museums, Sanchi was discovered in 1818, whereas Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds. सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के संग्रहालय और अतिथिशाला को बनाने में अनुदान दिया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा योगदान है. शायद हम इस मामले में भाग्यशाली रहे कि स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी. यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे. अमरावती को हम नहीं बचा सके क्योंकि अमरावती की खोज शायद पहले हो गई थी, जबकि सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई. तब तक विद्वान इस बात के महत्व को समझने लगे थे कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, अतः उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है. जब सांची के स्तूप की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालात में था. When Sanchi was discovered, 3 of its gateways was still standing and the 4th was laying on the spot where it was fallen, and the mount was in good condition. सांची के स्तूप के संरक्षण तथा रख रखाव में भोपाल की बेगमों शाहजहाँ बेगम तथा सुल्तान जहाँ बेगम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. इन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में गहरी रुचि दिखाई और धन भी अनुदान दिया. Due to the efforts of the rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum, who provided money for the preservation of ancient site. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि भोपाल की बेगमों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था सांची के स्तूप के संरक्षण में. Now we come to the next topic, that is symbols of worship. According to the hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार
एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। Many early sculptures did not show Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. अब हम इन प्रतीकों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो प्रतीक है वह है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है तथा स्तूप महापरिनिब्बान के प्रतीक बन गए। The empty seat was meant to indicate the meditation of Buddha. धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह नेक्स्ट में द स्तूपास was meant to represent the Mahaparinibbana, means one who has attained complete awakening. The wheel symbolized the Buddha preaching his first sermon at Sarnath, where he set Buddhist law in motion. Our next topic is significance of depiction of sculptures and animals as Sanchi Stupa. The literary folk tales, that is Jataka stories, are a source of art historians and reveal some of the mysteries of the depictions on the panels of Sanchi Stupa on the gateways. Art historians carefully studied the sculpture at Sanchi and identify it as a scene from the Besantara Jataka. This story about a generous prince who gave away everything to a Brahman and went to live in the forest with his wife and children. Animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, were depicted to signify the strength and the wisdom. While some historians identify the figure as Maya, the mother of Buddha, others identify her with the popular goddess Gajalakshmi, literally the goddess of good fortune, who is associated with elephants. इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उसका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों से जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया या गजलक्ष्मी से जोड़ते थे। It is also possible that devotees who saw these sculptures identified the figure with both Maya and Gajalakshmi. Now consider too the serpent which is found on the several pillars. This motif seems to be derived from the popular traditions which were not always recorded in the text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. That's all in today's class. Thank you.